relating to modal auxiliary, perhaps. And so many students have given their answers. It may be right or wrong, that doesn't matter. Still then, to face the challenge is important so far as modal auxiliary verb is concerned. And I had detected how many questions? 10 questions only. 13 questions relating to 13 modal auxiliary verbs. You have gone through nicely. Still then, there was certain type of ambiguity. किसी किसी doubt रहितला, confusion रहितला so far as the initial classes are concerned. First class रे किसी तुमरो doubt थिला, बहुत गुड़े पिला भी they are yet to come. बोधे आसी नाती आसीबे कॉलेज कंप्लीट होला परे. फिर स्टूडेंट्स आमे देखिबा हमर जो रिलेटिंग टू फर्स्ट चैप्टर आमे डिस्कशन करिथिले स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ कंप्लीट हिथिला. स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ तमे नथिला नाही. स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ पढा हिथिला नाही. Listen, students. Grammar answer. I expect that when almost all the students will come, thereafter we will discuss. Because so many students are yet to come. बहुत गुड़े पिला आसी नाती ना आसीबे आसीबे तेणु आसीबे टिके मु भाबुची अलगा कोन पाठ डिस्कशन करूथिबा एटा समस्तकर डाउट थिबो ना. तापर जस्ट कॉलेज सरला तो पिला आसिया पई टिके टाइम लागिबो. हाउ we will have to discuss something else relating to. So far as arts stream is concerned, we must have to focus experimentally on English. Why I am talking about experimentally on English? What you learn today, you must have to express it in communication. You must have to develop your spoken English skill. Then and there, we can say that we must be experimentally perfect. We discussed about modal auxiliaries, shall, should, will, would, may, might, can, could, used to, ought to, need, dare, must. These are modal auxiliaries and how we can express it in our day-to-day life. That is vital. You must not be the students of a class 10, just learners. You must be the expressors. आमे जोटा को पढ़िले डे टू डे लाइफ रे आमे केमिति फेस कम डे टू डे लाइफ रे आमे केमिति एक्सप्रेस करि परिबा. दैट इज वाइटल फॉर ऑल ऑफ अस. सो supposing that shall, should, will, would, may, might, can, could, used to, ought to, need, dare, must. By using these 13 modal auxiliaries, by the supplementation of a primary auxiliaries, we can at least travel 193 countries by developing our communication skill, by talking to anybody else. जो कंट्री की गले आम एक्सप्रेस करि परिबा हम व्यू पॉइंट को डे टू डे लाइफ रे इम्प्लीमेंट करि परिबा. मु कहबे पिले आमे गोटे जगह को पिकनिक जिबा की आमे गोटे जगह को पिकनिक जिबा की हाउ वी कैन एक्सप्रेस इट. आमे गोटे जगह को पिकनिक जिबा की एटी कोन लागिबो मोडल कोन लागिबो. यस आज्ञा
हेलो କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସରେ ଅନଲାଇନ ଅଛି ଜାଗାରେ ତ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେବି ହଁ ରାତିରେ I will explain almost all the things. Students, very nice afternoon, and we are also supplementing good before that. Good afternoon to all of you. But we are exploring ourselves relating to how we can express our ideas only going to the 13 principles. And students, you would be very affiliating yourself only using these 13 words. We can supplement it 169 sentences. That is the square of a 13 in case of spoken English. So deliberately, when we are learning about modal auxiliaries, how we can supplement this knowledge in our day-to-day life, that is vital for our communication skill. It doesn't matter you may be students of Odia medium or English medium or Hindi medium. That doesn't matter. Still, then students, after completing our graduation level, we must have to face the interview in English medium. You can go through different type of apps. One call was there relating to civil. So my optimism is that you ought to be explorative by using these modal auxiliaries, and we have done at least 13 sentences. I feel that almost all the students are here in. So discuss the matter relating to, suppose we will use shall, thereafter should, then will, would, may, might, can, could, used to, ought to, need, dare, must. The next class would be by using these 13 sentences, students try to write at least 20 sentences. By using these 13 words, particularly, you can use 20 sentences each by writing in the landscape which is available in the your copy. A copy re minimum 20 sentence use करके आसेबो relating to this. Suppose you will start speaking, students, when you initiate yourself, just use these words and it would be at least 13 sentences. So far as my point of view is concerned. That will enlarge efficient yourself relating to modal auxiliaries. When we are supplementing or using this, shall, should, will, would, may, might, can, could, used to, ought to, need, dare, must. So in the initial, I told you that English versus experimentation. And what we will learn today, that is relating to experimentation. Suppose shall is to be used. Shall relating to permissibility, shall relating to futurity, shall relating to suggestion, shall relating to advice. So students, my point was that ମୁଁ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ ଯିବା କି କଣ କହିବା shall we shall we go picnic to a particular place. That place ought to be utilized. Thereafter should, suppose, what is your suggestion relating to should? Sir, we should not go to a place where there is danger, there is risk. It may be Bhitarkanika, it may be Tikarpada. Try to understand. We should not. It is relating to obligation. It is relating to obligation, that means we ought not go. When a negative perception is there, should must be placed by ought not. When positive association is there, ought must not be used but should must be supplemented. Thereafter, when there is should and ought to, in case of a particular sense, we use should. In case of a general sense, we use ought to. We should respect our parents. It is particular. Your parent is particular for you. That is according to your Aadhaar card. But when we are talking about moral obligation, we ought to serve our motherland at the time of Operation Sindoor. That is ought to.
जितेबाला आम कॉमन सेंस रे कहबा समस्त जोटा जरूरी तुम नुहे मो नुहे सब भारत वर्ष को जिते आप्लिकेबल हम दैट इज अट टू जिते इंडिविजुअली पर्टिकुलरली कौन सी कथा आम कहवाक चाहिए से जगह लगे सूट and we will have to experiment it when we serve the exercises जो माने टिके ओडिया मीडियम बैकग्राउंड आछे टिके हार्डशिप आसी पारे किछि असुविधा होबनी आ परे भी मॉडल रिलेटेड बहुत गुडा मो ट्रांसलेशन तुमको प्रोवाइड करिवि ट्रांसलेशन कला माने कांसेप्ट आउट के क्लियर देन स्टूडेंट्स मुझे स्पीडली डिस्कशन करूँ जो लास्ट क्लास रे एक्सरसाइज गुड़ाक टिके रिकप करवा डिस्कशन करवा रिलेटिंग टू देन विल two types of people are available within the society. Two types of people are available. One is man of will, another is man of want. Man of will means having determination. I will crack plus 2 securing more than 93-94%. And thereafter, I will try to understand my point of view. I will secure more than 93 or 94%. Thereafter, I would join special coaching for civil services in New Delhi. First sentence रे कहीं will लगैली, sentence रे कहीं would लगैली. तमे बर्तन प्लस टू कंटिन्यू बर्तमान तम पाखे तमे प्लस टू रिजल्ट कथा कहि परिबो तमे कोन सिविल रिजल्ट कहि परिबो सेति पय मु will लगैली डिटरमिनेशन. Will means must. Try to understand. Will is determination, will is a must. But when we discuss about want, that means we become to certain extent the spirit of a cowardice. मो द्वारा हबनी मुझे पारिबिनी आगुरी देखिबो नर्वसनेस आसीजिबो 2009 as man of want. जो माने man of will, then they are the determiners, they are the I mean find the deterministic personalities. वर्तमान जो माने हम जदि कहबा मैन ऑफ ओंट माने से जे कोन से कथा इनिशिएट हवा पूर्वरु नेगेटिव कहबे नाही एटार मो द्वारा संभव होबो नाही. देयर आफ्टर स्टूडेंट्स मे नॉट. may means it is 50-50. It may rain today or may not. It may rain today or may not. There is possibility having positive association or negative perception. आमे जो कथाटा कहूचे हेई पारे न हेई पारे सेति पई मे जोटी लगा जाय थाए ओडिया रे सेंटेंस कोन होइता है आजी हुए तो वर्षा हेई पारे हुए तो इन द सेंस मे नॉट किंतु माइट को जगह रे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट सपोज द डार्क क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई कला बादल खंड गुडा आकाश रे बुली गलेनी सब घुरी बुलुचंती एंड वी फील दैट इट्स गेटिंग टू बी रेन प्राय वर्षा हेबा को जाउची से जगह में कोन कहबा it might rain today. यदि अधिका इंट्रोस्पेक्ट करिबा अधिका रिट्रोस्पेक्ट करिबा अधिका एम्फासिस दबा कौन सी कथा ऊपर अधिका एम्फासिस दे कहबा दैट इज माइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मु कहबी मु हुए तो जाई पारे ओडिया मीडियम अच्छा ओडिया बुझी परछ मु जो कहू ओडिया पीपल स्पीकिंग आर अवेलेबल बुझी पर ओडिया टी कहले चलिबो तो वो माने ओडिया चलिबो. हां मु कहबी मु हुए तो जाई पारे आई मे गो मु हुए तो जाई पारी थांती आई माइट हैव गॉन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मो द्वारा सेटा संभव हेई पारी थांता मु से कामटा करि पारी थांती दैट इज माइट हैव गॉन ता माने मु जाईनी नेगेटिव परसिस्टेंस इज देयर वर्षा. So almost all try to intercept with me. Interaction must be held up with me because it is coaching. What is the difference between tuition and coaching? What is the difference between tuition and coaching? Almost all. Monica? What is the difference between tuition and coaching? Tuition is instruction. Tuition is instruction. Suppose I am teaching Jyoti. मुटा ज्योति की ट्यूशन करुचे ट्यूशन ज्योति की होमवर्क दे देबी ज्योति काली की एया को पढ़ी के पळे आसीबो. बट कोचिंग इज डिसेमिनेशन. तमे किछि कहबो मु किछि कहबी एटी के टीचर स्टूडेंट में कि स्टूडेंट माने टैलेंट टीचर स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन में क्लास चलेबो जे जोटे जानिचो ट्राई टू इंटरसेप्ट इट ट्राई टू इंटरैक्ट इट. सो स्टूडेंट्स इट विल बी द फाइन एंटरटेनिंग क्लास. सो फॉर आज द मॉडल ऑक्सिलरी इज कंसर्न. सो स्टूडेंट्स जतबे माइट कथा हमें कहले टिके अधिक एम्फासिस आसुची अधिक स्पोरेडिक एम्फासिस आसुची जोटा हमें कोन करबा रिलेट करबा जोटा हमें कोन करबा रिफ्लेक्ट करबा. So far as communication is concerned,
Then students, can could. Can. Can means ability or capacity. Ability or capacity. Suppose you can bought a 15-liter box, or I mean pan or jar. But a jar and a 15 liter. So 15 liter ta तार कौन हबो capacity. This jar can contain 15 liters. But तम मानक भितर बहुत बढ़िया पिला भी भलो परसेंट रखिछ. मैथ रे भी भलो करिछ. You have secured more than 90% in mathematics. ତେଣୁ ତମେ କଣ କହିବା? I can solve this sum. I can solve this sum. Can ସେଠି ୟୁଜ ହେଲା କଣ? Ability. ଯେତେବେଳେ jar କଥା କହିଲେ it is capacity, container. But when we talk about solving the math, it is nothing but our ability. So can reflects relating to ability. Can also relating to permission. May is relating to permission. What is the difference between can and may, Jyoti? Jyoti, what is the difference between can and may? Any question? What is the difference between can and may? Jyoti told nicely, but try to reflect students in English. It may be right or wrong. It doesn't matter our communication skill is right or wrong. Still then try to speak. A formal, informal sense, you, Tanish. Okay, almost all. Thanks everybody. Also, listen students, when we are discussing about suppose you are entering into the class, may I come in, sir? But students, you must be moving, uh, you must be moving anywhere else, maybe airport, you may be on Mo bus or a Ammo bus, whatever you can say. Suppose students, it is two seated, and you got into the bus, you have paid your fees, you have paid your actual due to go to Bhubaneswar, but one seat is filled up by the girl, the another seat is vacant, any boy is moving there. He is standing there and he will ask the girl, can I sit here? Not may I sit here. Try to understand the point. May hoche amara entry kariba permission. Permission in the sense it is respectable sense. That is permission. बहुत पिला भी may I come in न कहिकिर कोन एंट्री करनाती किंतु बस रे के बिना पैसा देके जाउछु बस रे जेतेबेले दी टिकिया सीट अछि गोटे सीट रे गोटे झियो बसछि से साइड रे गोटे पुओ बसिबो सेतेबेले से जेतेबेले पचारिबो परमिशन न कैन आई सीट हियर काई कैन कहबो से गार्ल देछि पेमेंट भुवनेश्वर जिबा पई फेयर टा देछि ये बॉय भी मध्य फेयर देछि जेतेबेले सेठी पचारिबो कैन अराइज करिबो से कहबनी मे आई सीट हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड so students when we are emphasizing on may and can what you told relating to formal and informal you are 100% okay but the thing is that students when we are expressing can it depends on the procedure that how you are exalting yourself to the environment concern environment को base करके तमे केमिति कोन निजे के निजे रिनोवेट करछ आइडियाज नेक्स्ट स्टूडेंट्स आसिला हमर could what is the implementation of could I have told it so far as the formula, so far as the rule, so far as the actually proceedings are concerned, so far as the scheme of behavior is concerned, could is used in case of past habits. Past habit. What is the use of could in your day-to-day life? Speak quickly, students. को माने बुझी परछ को बाबा रे लिसन बुझी परछ तमे ना कोन बसी को बड़ बड़ कोन बबलू बबलू बढ़िया तम ना रमाकांत तम ना प्रीतम तम ना
दी जन रमाकांत अच्छे भला दी जन बेस्ट फ्रेंड तुम ना खगेश्वर आय यू प्रीति रंजन ओके टिके टिके तमे क्वेश्चन आंसर भूल हो कि ठीक देले मोटे नाम मन रखी नले मो नाम मन रहना हैला एथर कहबो सब अच्छा कहला कूड रे कोन एप्लीकेशन अछि कूड हमें को जगह यूज करबा एप्लीकेशन डाकी नथिले रूल डाकी नथिले कूल हेतला कोडी पास्ट टेंस ऑफ कैन रो पास्ट टेंस को कूड सेंस रे हमें यूज करबा गोटे आउ कूड कोन पास्ट हैबिट्स आउ कूड ता कहा जगह प्लेसमेंट हे परिबो पोलाइट रिक्वेस्ट हे परिबो would टा कहा जगह में यूज करिबा सो फार एज मॉडल ऑक्सिलरी आर कंसर्न यूज used to refers to past habits could also refers to past habits used to or could both are equal so far as their formal dealings or application concern ताले हमें कहबा could को हमें केमिति यूज करिबा could रो गुटे एग्जांपल दिए पुओ फास्ट हमें कहिथिले कोन पास्ट टेंस ऑफ कैन रूल गुडा लेखि नै जिवो से क्लास आसी नथिला ना आज नै जिवो ठीक है जोटा डाउट हो पछेरी केबे ठीक रे बुझी हो listen students so used to could suppose students you are going on with your past habit in your schooling or in your school days you are habituated yourself relating to odissi dance सेतबे स्कूल डेज रे तुम ओडिसी डांस करूथिलो तमन हमें कोन कहबा I could perform odissi dance in my school days try to understand could होबना नहीं और I used to perform odissi dance in my school days जोटा could replacement सेटा हला used to replacement in your day to day life thereafter students polite request could you please hand over your political science book could you please hand over your grammar book could you please hand over your pen anything else that is related to polite request try to express it and when students speaking it is a model oblige there is some need of expression आमे जेतबे कहा सहित कम्युनिकेट करूचे सेठी प्रत्येक वर्ड रे एक्सप्रेशन पई मध्ये हमर अछि कोन टिक केमिति हम भाषाटा को यूज करिबा बिट बाय बिट हम मध्ये ताको एक्सप्रेशन करिबा नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैन कोड यूज्ड टू ought to need what is the meaning of a need at the present scenario and how we can utilize it needs and how we can utilize it in our day to day life needs necessity then okay students you must be knowing about I need this book right when we students actually compromise ourselves in a day to day communication skill need has certain type of vital aspects and you must be knowing about need dare what are those need dare को हमें कौन कहता हूँ सेमी मॉडल why सेमी मॉडल हमें ताको कहू यूज टू बी सेमी मॉडल है परिबो किंतु ग्रामर बुक रे दीटा दउची हमें जे देखबा तीनटा तर काहे की कहआ जाउची पिले तमे पर्टिकुलर देखो जदि बर्तन यूज टू कथा कहइबो ये नीड कथा कहइबो ये को सेमी मॉडल कहआ गला कारण तार फॉर्मेट चेंज हे परिबो काहे की चेंज हे परिबो प्रेजेंट v1 फॉर्मेट अछि v2 फॉर्मेट अछि यूज नीड्स नीडेड try to understand तेणु करी ताको सेमी मॉडल कहआ गला इंक्लूडिंग डेयर को so students when we express about need it compromises the principle relating to necessity जेतेबेले हमें नेसेसिटी कथा कोई नीड यूज करू आ जेतेबेले हमें पर्टिकुलरली हमर जेमति हमर असिंत कहला जरा जे मु कहबी आई हैड वन पेन मोर गोटे पेन थिला किबा आई हैव वन पेन मोर गोटे पेन अछि आई नीड नो मोर आवश्यक करू हला आई हैव टेकन टू माय हार्ट कंटेंट मु मोर पूरा पेट भरपूर खाई देले आई नीड नो मोर मु अधिक खाइबा को चाहू that is the placement of a need and a dare is used to face the challenge any complication any critic attitude as well as attribution at that time we use dare suppose I dare to face the challenge I dare to this complexity I dare to go to the top of the mountain top of the hill so students these are the terms relating to dare and most is nothing but its a supplementation most of the time is will suppose students will is there
and it is moving fan. It's not permissible to touch it. Suppose there is disconnection, there is certain type of, I mean, lively wire. Lively wire is there. गोटे गोटे इलेक्ट्रिक करेन्ट ओढी गोटे जगह से इलेक्ट्रिक आम गोटे तार से इलेक्ट्रिक करेन्ट पास कर वी मस्ट नॉट टच इट आम टच करवा दीज आर एक्चुअली टोटल हमको सर्टन एंड प्रोहिबिशन एंड दैट इज यूज्ड थ्रू मस्ट मस्ट माध्यम यूज कर तेणु जो पिला माने रहिलो तुम मन को मन किसी क्वेश्चन अराइज कर किसी डाउट क्रिएट कर मत पचार इट वुड बी फाइन जहाँ मन रे आसछि पचार रिलेटिंग टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मु कहिबी डेयर किंतु डेयर टाको रिजेक्ट करा जाउ मु तुमको कहली तीनटा थिला बर्तमान मॉडर्न इंग्लिश रे दुईटा को कहै ए मॉडर्न इंग्लिश रे दुईटा को तीनटा थिला ग्रामर बुक रे बर्तमान जदि हमर चैनल देखि नबा ताले दुईटा को कहै जाउची सेमी मॉडल किंतु मैक्सिमम ग्रामर बुक दउची तीनटा को सेमी मॉडल यूज्ड टू नीड देयर कारण ए दुईटार पास्ट फॉर्म हे पारुची यूज्ड टू इडी लगी जाउची हमर नीड अछि नीडेड हे पारुची आकु कहै जाउची सेमी मॉडल देन स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी डाउट must and will listen students must and will listen students आमे जेतबे डे टू डे लाइफ रे अप्लाई करि पारुचे जोटी मस्ट यूज करूचे सेटी विल यूज करि परिबा जो जगह रे मस्ट अछि से जगह रे हमें विल लगै परिबा बुझि पाइलो ना नाही किंतु मन रख जो जगह रे विल अछि सब जगह रे मस्ट लागि परिबा विल जगह रे सब जगह रे हमें मस्ट लगै परिबा नहीं दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी तमे कहबे कोन पाई मस्ट होची 100% डिटरमिनेशन आई मस्ट डू इट मु जीपी आई शैल गो मु जीपी आई शैल गो से जीव ही विल गो से निश्चित जीव ही मस्ट गो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट मस्ट जगह रे प्लेसमेंट हम विल कर दे परिबा किंतु विल जगह रे मस्ट हम प्लेसमेंट कर दे परिबा नाही अर्थ बुझी पारछो ना नाही गोटे क्लास रे समस्त स्टूडेंट हेई परिबे ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट गोटे क्लास रे समस्त स्टूडेंट हेई परिबे किंतु सब स्टूडेंट माने गोटे क्लास को कंपोज करिवे माने ना अर्थ बुझी पारछो एठी बर्तन अछ तमे सब स्टूडेंट गोटे क्लास रो मु जतबे ऑफिस रे देखिबी गोटे गोटे बाहर करी जीवो सेठी मु गोटे तुमको क्लास कहि परिबेनी समस्त गोटे गोटे स्टूडेंट कहि ताले पहिले आमे देखिबा मस्ट जो ड्राइव 100% सियोरिटी यू मस्ट गो यू मस्ट सिक्योर यू मस्ट गेट जेतेबेले आमे कोनोसी प्रकार ऑब्जर्वेशन बा एक्सपेरिमेंटेशन करिबा मन रख मु कहबी वाटर मस्ट बी फॉर्म बाय द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रो कंपोजिशन हमर कोन होची कंपाउंडिंग रे कोन होची वाटर फॉर्मेशन हे करूची दैट इज मस्ट किंतु विल रहउगे जेतेबेले हमें प्रेजेंट करिबा दैट एक्सप्रेसेस वन्स फ्यूचरिटी and will is used in case of a second and third person it may be singular it may be plural it may be singular it may be plural try to understand the analysis suppose second and third person you will it is on the basis of a tense pattern it is on the basis of a tense pattern you will go that means there is a possibility you can go there is impossibility you may not go but students when we say you shall go you will go you shall go what is the difference here in case of a shall more emphasis is given than that of will so maximum modern english actually speakers use shall instead of a will so my point is that while we are determining ourselves जेतेबेले हमें टिके डिटरमाइंड हेकरे कोनसी कथा कहउछु से जगह will कहउछु
ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର टिके बेस करिकरी कहूछु सेतेबेले शाल यूज करूछु जेतेबेले टिके सर्टन बा सियोरिटी आसुची से जगह मस्ट यूज करू तेने विल आ मस्ट र यूज टा मॉडर्न इंग्लिश रे सिमिलर किंतु तमे देखिनियो मस्ट टाको आमे जेतेबेले कहिबा मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गेटिंग टू बी प्रिजुडिस बेले बेले जो मस्ट कथाटा आमे कहि दउ हमको प्रिजुडिकेशन आसे तमे भाबिनियो जने ऑल ओडिसा तम भितर के टॉपर हबो तमे एग्जाम पूर्व केबे कहि परिबो मस्ट केबे के 100% कहि परिबोनी कारण एक्सपेक्टेशन समस्त रही आई मे सिक्योर आई विल सिक्योर किंतु गोटे टीचर कहे यू शाल सिक्योर क्या टीचर तुमको पढ़े सी एम्फासिस देकर तुमको कहि परिबे शाल यूज करेंगे सो जो मॉडर्न इंग्लिश कंटेंट रे आमे कहू पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेशन को बेस करी सेकंड पर्सन कथा कुह किंबा थर्ड पर्सन ही सी इट आप अगर हमें कौन यूज कर लो विल आर प्लूरल फॉर्मेट कौन दे विल so students we are learning stage by degrees but the thing is that how it would be expressive how you can use it that is vital if you can use it fervently particularly actually while mixing with your friends communicating with your friends then and there the doubt will arise and when the doubt will arise you can get the advice of the teachers or your seniors or guardians so on and so forth तमे जहाँ सहित मिसुछ से सहित यदि कम्युनिकेट करिवो it will materialize itself again anything you the guys पुओ मानक पाखरु किछि पचार मते पुओ पचना काई भाई करछ पचार फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मु कहिबे so far as english is concerned english माने नुहे इन्विटेशन 1 2 3 4 को पढी दियो इन्विटेशन 1 रे प्रोज पोएट्री रहला स्टोरी गुडाक ताको हमें बीट बाय बीट पढ़िबा तो समरी दबा एक्सरसाइज दबा इजे हला पर टेस्ट करिबा बट आई फील दैट प्रत्येक चैप्टर जोटा हम एनालिटिकली एक्सप्लेन कले जोती यू मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट इट तो हमें ताको इंग्लिश टू इंग्लिश को आम पाखे जमा 2 वर्ष प्लस टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तुम मान भीतर जे सीयूटी पाइबो से जाई कोडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे पढिबो जे दिल्ली लेवल रे पाठ पढिला सेठी भाइटल होउछ तुम मान कम्युनिकेशन स्किल आर्ट्स लाइन रे अच्छा माने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आउ जोटा नॉर्मली आमे कहबा इंग्लिश हम पई कष्ट इंग्लिश तो कष्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो चीट नै करी पढी करी कहउछन किंतु तमरी भलिया पिला माने केते एक्सीलेंट स्टूडेंट अछन जो माने एपीजे अब्दुल कलाम केते फैंटास्टिक क्वेश्चन अरेंज करथिले भाबिनियो so to try to be the exceller yourself try to use the communication skill try to actually ameliorate yourself how we can develop your communication and for that purpose learning to india is always before you and after you it is advancing center I am talking students you can gossip yourself students ameliorating yourself try to modulate your knowledge speak and let speak to others while we are students learning about english I feel that the vital thing modal auxiliary another thing is verb so in our life students जोटा हमें कहिचे तमे गीता पढ़ो भागवत पढ़ो रामायण पढ़ो बाइबल पढ़ो कुरान पढ़ो हम पई गॉड किए व्हिच इज गॉड व्हिच इज गॉड भगवान हम पई किए हम पई गॉड किए एक्शन एक्शन इज गॉड कर्म ही भगवान आमे सब बड़े कहि के आइछे एक्शन एक्शन द मॉड्यूलेट हेछि एक्शन द फॉर्मेटिव वर्ब कोन एक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्ट एक्ट होछि वर्ब एक्शन हला नाउन सो स्टूडेंट एक्ट रो सिनोनिम कोन वर्क वर्क का को सप्लीमेंट करे always make your concept clear relating to verb pattern when we are accelerating yourself relating to verb english class is getting to be over तमे सबले 8th 9th 10th रे पढी के आस्तिबो रिलेटिंग टू वर्ब बाबद रे जोटा भी रहिछि टिके फॉल्ट बा डिफिकल्टी एठी हमें कंप्लीट करिबा एठी बर्तन देखो कहलो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स जे कहूना तमे गोटे वर्ब रो टाइप कुआ भाई करना बहुत भल स्टैंडर्ड अच्छी पुओ मैंने तो सब तुम तो रेकर्ड होल्डर हम केते बढ़िया पिला माने अछ कुआ
From boys side, types of verb. पुओ माने कुह देखिए पुओ माने केतटा कहउछन झिया माने केतटा कहउछन तनिष verb types कोन auxiliary main verb गोटे आसेला पैटर्न देखिबा सुना पिला बळे कहि दियो auxiliary verb and main verb thereafter आउ कोन verb अछि जति told transitive intransitive intransitive verb then primary verb modal auxiliary say through auxiliary verb is classification how types of verbs को हां भूल ठीक हो that doesn't matter डी verb का auxiliary पळेला helping verb का auxiliary verb का helping verb ये कहूना तमे हां it is your first class you have attended english classes this is first class I am talking it is कौन को मोनिका verb types तो हम को पिला माने बहुत बढ़िया हमर 7 rising stars and here 5 12 rising stars we have one cricket team as well as one extra player I am the umpire so students हुआ वो पिला ने कहउछन प्रियंका कह भाभी की कह भूलो हुआ वो कहनु आसीबो कह what are the types of verbs finite non finite finite and non finite verb thereafter strong verb and weak verb very good के भी मध्य synchronically कहिलो जणे को के जे हम जानि पहिले शुभ ओके दिस डे इज ऑलवेज शुभ टू यू नेक्स्ट आउ कोन रहला को आमे तो इंग्लिश कहू बेले बेले कोन करछु यूज करछु आ बेले बेले यूज करनु जते बेले यूज करता कमे कोन कहलु रेगुलर आउ गोटे इरेगुलर regular and irregular verbs okay students irregular and irregular verbs thereafter students auxiliary verb main verb transitive intransitive verb finite verb non finite verb strong verb weak verb regular verb irregular verb next students another verb is there you have gone through in 10th class 10th class it was available in Odia medium as well as English medium students very fine chapter and you will also read it in plus 2 second year what is the last part verb Priti think and say it may be right or wrong that doesn't matter students try to be explorative direct English is verb phrasal verb was not available and it was for I feel particularly board of secondary education Odisha it is well annotated and the chapter was available finally available but may not be in CBSE
Okay, students. These are very helpful. These are very helpful in learning English. So we must have to discuss bit and bit relative to it. And what is its use? I feel to certain extent କିଛି ତମେ ଜାଣିପାରିଲ modal verb exposition ବାବଦରେ ମୁଁ ଧରା ଯାଉ କହିବି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ତୁମକୁ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି ଭାଇ actually student when the class will over that depends upon our schedule good previous class ର discussion ହେଲା okay try to remember these terms these would be finally explained to you with examples as well as communication modal ର ମୁଁ ଭାବୁଛି 13 ବାବଦରେ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ intercepting idea ପାଇଲେ thereafter students ये जो verb pattern हमें जानिबा reading करिबा English side by side with communication side by side with communication ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି ତୁମକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ସାର୍ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବି ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ସହିତ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ରହିବେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ର ଟିପ୍ସ as well as ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ର ଟିପ୍ସ ବି ଦିଆଯିବ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ ଆମ କୋଚିଂ ରେ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ अवेलेबल ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉଟସାଇଡ ରେ ଅଛନ୍ତି they are out would be discussed later on okay if you are intercepted and it would be disclosed on the class what was the question first question students shall relating to future suggestion will determination would polite request past tense of will can ability capacity could past ability past habit may permission or possibility might future prediction and emphasis used to past ability and these are to be remembered students while expressing with your friends try to learn students you are good speakers still then you are lacking your confidence each and everybody can say तुमको जदि बर्तमान प्लेन नहीं लंडन में चढ़ा हो तुम से इंग्लिश कहबनी आई नीड वाटर आई नीड टिफिन आई एक्चुअली वांट टू गो टू ए होटल ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट जिते बाध्य हम हेनी कह तुम पहरा शिखिना तुमको मझी नई छड़ा हो जहाँ गोड़ा तो बाड़ब ना ना तेणु इंग्लीश हूँ से आम जो छोट पिला तुम भाव नि तुम कुनि कुनि पिला अढ़ाई वर्ष जो स्कूल को गल से ओडिया ग्रामर जानी इंग्लीश ग्रामर जानी कि कथा कहूल ना ना कथा कहून किंतु वर्तमान तुम टैलेंटेड हो गल ग्रामाटिकल रूल अनुसार कहया चेष्टा कर तेणु ट्राई टू बी एक्सप्लोसिव सो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिला इट डैश रेन टुडे इट मे रेन टुडे नेक्स्ट आमर विल देख he said that he dash do the work he said that he dash do the work केमती हम गुड हम कारण पिले देख ही सेड बर्तमान रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रे अछि रिपोर्टेड स्पीच रो वर्ब गुडा पास्ट रे रहइबो ट्राई टू एनालाइज कांसेप्ट क्लियर होउची ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज इंडियन क्रिकेट टीम होउची तो अरे बाबा तापरे देख आई डैश सॉल्व द सम हाँ ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आउट रिपीट रे कहि दउची ही सेड दैट he would do the work he could do the work भी करिवो last I dash solve this sum can it is my ability I can solve this sum तापरे I dash swim in my childhood days used to or could बुझे होची प्रीति को माने बुझी पाइलो जो जगह यूज टू अछि सेही जगह could लागिवो जो जगह could अछि सेही जगह used to लागिवो हला कि next students we dash serve our motherland at the time of war ought to moral obligation try to understand the point students जते बेले पेरेंट्स मान को कथा में कहूची एटा पर्टिकुलर तम पेरेंट को तमे केमिति रेस्पेक्ट दबो दैट डिपेंड्स ऑन यू सेति पे हमें कोन कहू वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स आउ शुड ऑट रो मु गोटे बहुत बढ़िया ड्रामेटिकल क्लास बढ़िया क्लास नेबी कौ जगह देखियो बहुत जगह एठी कौन हम एक्सेप्शन रूल हम
गोटे पॉलिटिशियन केमिति शुड को इम्प्लीमेंट करूछंती गोटे बिजनेसमैन केमिति शुड को इम्प्लीमेंट करूछंती गोटे टीचर केमिति शुड को इम्प्लीमेंट करूछंती कॉमनली जो माने हाउस वर्कर रहिले से माने केमिति शुड को इम्प्लीमेंट करूछंती एटा तार वेरिएशन हबो मते टी केतेबेले रिमाइंड कर दबो गोटे हमें केतेबेले क्लास नै कि बुझेबा इंटरेस्टिंग रहइबो नेक्स्ट स्टूडेंट्स we does respect our parents should then I have two books I dash no more need no more मोर दीटा बुक अछि हमर बुक कोन हबो मो पकरे इनविटेशन बुक गोटे अछि आ गोटे बुक मो कोन करबी बुझी परछन नै पुणी पिले I have two books I need no more if you call him he dash come will come एटा कौन दिला पिले कहला 10th लेवल ले तुम ऑलरेडी कंडीशनल क्लॉज पढ़िछ कंडीशनल क्लॉज ओनी कहीं मस्ट बी नोइंग अबाउट कंडीशन कंडीशनल और कंडीशनल क्लॉज सेतिरा हमें यूज करथिले एटा को कंडीशन अब को ट्राई टू फाइंड इट आउट इफ यू कॉल हिम ही डैश कम विल रे मु तुमको कहिथिले ना सबु मस्ट गुडा को विल हे परिबो सबु विल मस्ट हबनी कंडीशन रा कुह एटा को रूल को जिवो इफ यू कॉल हिम ही विल कम एटा को रूल को जिवो रूल 1 होची ओपन कंडीशनल रूल 1 ओपन कंडीशनल हमर कंडीशनल केतटा प्रीति चारिटा रहिची जीरो कंडीशनल रूल 1 ओपन कंडीशनल रूल 2 हाइपोथेटिकल रूल 3 इमेजिनेटिव बुझियो जिजिया बुझी परजो प्रियंका जो मानकर डाउट रहिबो कॉलेज जो दिन नाही 11टा बेले ता पूर्वरु मो नंबर तो अछि समस्त पाखरे कॉल कर दबो सर हमें टिके एक्स्ट्रा क्लास कहीं जेबू 11टा रु 3टा जाके मो अवेलेबल रहउची मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आसिकरे डिटेल्स बुझी करी जाई परी बुझी परछो ना क्लासरूम अटेंड कर एटा कॉमन क्लास पर्सनल क्लास में जॉइन कर बट प्रायर इंफॉर्मेशन इज नीडेड देयर ओके स्टूडेंट्स इफ यू कॉल हिम ही विल कम इट हाला ओपन कंडीशनल जे बुझी होची मा बुझी परछ समस्त को माने एटा टिके भी हर पैटर्न ने सब अछि हर चैप्टर टा को एनीवे हमें कवर अप करबा भल से वी डैश नॉट टच ए स्नेक we does not touch a snake आमे सब जानिचे बर्तन बोल बम जाउचे बोल बम रो यदि नागटा केमती एपट को फेणा कि सेपट को फेणा रहिची यदि नागटा सतर नाग होइबो आ के बोल बम जिबे शिवंग बेकर जो साप अछि सतर से जीवन रही गला तमे आ मुंडिया मारिबो सेठी मुंडिया मारला से चोट देथिबो तेणु करी पिले आमे मोरडे कहबार उद्देश्य होची सर्प समान भयंकर साप को आमे केबे टच करिबानी इट इज देयर एट बेयर नीड्स इट इज श्योर शॉट एडवाइस टू यू दैट मींस मस्ट नॉट वी मस्ट नॉट टच ए स्नेक साप पा जदी कहबो कि ए गोटे क्लास रे साप अछि बोले केही आसीबेनी टोटली कोचिंग आ सेठी सूट कोट लागि तेणु मस्ट एंड देन डैश वी गो ऑन ए पिकनिक साल पिले साल रो टैग क्वेश्चन दा मु कहबी आई शैल गो टू भुवनेश्वर आई शैल गो टू भुवनेश्वर कौन हम तार क्वेश्चन कि आउटे मु इजी कर देबी आउटे इजी कर देबी शैल वी गो ऑन ए पिकनिक कौन हम तार क्वेश्चन जोटी साल थी मु कही दउची मु जानि परतो मोर डाउट रहउची जोटी साल थीबो मन रख कि हमर सजेशन थीबो से जगह रे यूज करू शुड जोटी सजेशन थीबो शुड ता क्वेश्चन रे तेनु एटे जो देखिनियो डैश वी गो ऑन ए पिकनिक शैल वी गो ऑन ए पिकनिक एटी आउटे बुझिबार अछि आ गुटे चैप्टर परे कांसेप्ट क्लियर हबो देयर आर ब्लैकआउट्स इन द स्काई इट डैश राइन टुनाइट माइट he dares to face the challenge dares to face the challenge I dares play football in my school days past habit used to ei paribo would be used to ei paribo would it
कितना 12 number. He dares to face the challenge. He dares to face the challenge. Okay, students. Homework. Okay, students. So the homework is relating to modal auxiliaries. Try to go through it minutely. If any doubt, you can ask me the question. जिते प्रकार जिते थोड़ा बुझे बुझा हम ओडी हबार ना गोटे क्लास रे केबे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जीवनी बुझी पार तेणुक एगेन एंड एगेन रिपीट कर तुम क्वेश्चन आराइज कले बुझे सुविधा हम भय कहीं कर भल पुआ गुड़ा तुम सब इंडियन क्रिकेट टीम रे तुमको रिनुसिएशन मुझे आउ कौन तुमको अवार्ड दिया था खाली तुम जितले वर्ल्ड कप मिल मो देह भल न लगे मु काली हॉस्पिटल जीवी अर्थ बुझ पिले मो देह भल न लगे इफ आई डोंट फील वेल इफ आई डोंट फील वेल आई शैल गो टू हॉस्पिटल एटा हे गला कोन ओपन कंडीशनल जेतेबेले मो देहटा भल न लगे इन द सेंस सेटा हला ओपन कंडीशनल आ मु जीवी कोउटी की फ्यूचर प्लानिंग मु हॉस्पिटल को जीवी तेणु करी तमे एठी कहि परिबो मने सर एटा कोन पई हला जेतेबेले आई विल कहीं कहया जीव शुण मो देह भल न लगे मु निश्चित जीवी तुम कहूच कि मु हॉस्पिटल जीवी मो देह भल न लगे मु हॉस्पिटल को जीवी बर्तमान न लगे यहाँ गोटे कंडीशन हो जाऊनी कि नाई नाई ये यार कहबार अर्थ बुझ मो देह भल न लगे मु काली हॉस्पिटल जीवी हॉस्पिटल जीवी इन सेंस कौन निश्चित अर्थ रे कहूँ कि मस्ट कौन लगे से केमती लगे जीविनी तेणु आज मु प्रेडिक्शन करुच्ची आज मु प्रेडिक्शन करुच्ची बर्तमान प्रेजेंट कंटेंट रे तमे जेतेबेले वर्तमान कहल सेटा प्रेजेंट काली तमे जीव सेटा फ्यूचर जेतेबेले प्रेजेंट आ फ्यूचर भितर कंट्राक्ट आसे दैट इज नथिंग बट ओपन कंडीशन तेणु फास्ट ऑफ ऑल जान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंडीशन तमे मते जोटा पचारलो सेटा हो जोटे कंडीशन से गोटे स्टेज कंडीशन नो मीनिंग कोन कंडीशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर तम बापा माँ एठी पाठ पढ़िया को पढ़े छाड़ी सेटा प्रेजेंट तमे भल रिजल्ट करिवो सेटा फ्यूचर तेणु कंडीशन होची कोन एग्रीमेंट बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर तमे वर्तमान जोटा कहला नोहिले नोहिले इन द सेंस लेस्ट को हमें पळै जिबा हैला तने सेटा मते तार आउ केतेटा रहउची वेरिएशन कांसेप्ट